So friends, I am Rajeev Ranjan and I'll be taking up your JET English classes. Since this is our maiden interaction, let me make it very clear to you that my only introduction is that I am a veteran as far as the English language and literature is concerned. और मेरी ये पुरजोर कोशिश रहेगी कि आपके आकांक्षाओं के साथ मैं इंसाफ करूं. Before we begin, let me indoctrinate you on certain aspects of literature. This is a field which requires a degree of application. It also requires a degree of that inner inspiration. अंदर की अनुप्रेरणा होनी चाहिए कि हमको एक लक्ष्य प्राप्ति करना है. देखिए, आपको जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ना है. मिल्टन अपने पैराडाइज लॉस्ट के शुरुआत में ही बड़ा ही प्रभावशाली तरीके से ईश वंदना करता है. वो कहता है, while it pursues things unwritten, yet in prose or rhyme, what in me is dark illumine, what is low raise and support, so that at the height of this great judgment may I assert eternal providence and justify the ways of God to me. अर्थात आज जब मैं ये प्रयत्न शुरू कर रहा हूं तो न भूतो न भविष्यते, न भूत में न भविष्य में ऐसा महती कार्य हुआ है. और हे ईश्वर, इस कार्य को प्रतिपादित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो भी मेरे अंदर अंधकार है, तामस है, विकृति है, उसको हटाओ, मेरा परिष्करण करो, अज्ञान से ज्ञान, अंधकार से प्रकाश के तरफ मुझे मार्ग दिखाओ. कुछ वैसे ही जैसे हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय. लीड मी फ्रॉम darkness to light, from the unreal to real, from death to immortality, O Almighty. उसी तरह जैसे कि महान व्याकरण के रचयिता पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखने से पहले 52 श्लोकों में भगवान शंकर का वंदना किया. तो लेट अस बिगिन इन दैट सेम vein, with that same gusto, with that same enthusiasm, with that same unimpeachable application to success. H.W. Longfellow, Henry Wadsworth Longfellow, the great American poet, has rightly said, life battles do not always go to the faster or stronger man, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. जीवन के संघर्ष अक्सर
सबसे बलशाली, कुशाग्र या तेज व्यक्ति के हिस्से में नहीं जाते, लेकिन देर सवेरे वो आदमी हमेशा विजयी होता है जिसके अंदर ये भावना रहती है कि मैं कर जाऊंगा। द मैन हु थिंक्स ही कैन। So let me initiate you, my dear friends, in this sacrosanct mission of success, happiness, and future well-being. Coming straight to the topic now. इतना बहुत हो गया, आपने एक प्रारंभिक तौर पे मुझे भी जान लिया और एक प्रारंभिक तौर पे मेरा भी आपसे साक्षात्कार हो गया। अगर सिलेबस आप देखते हैं झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 10 broad segments. First is the drama portion. Right from the time the English drama took its rudimentary form in the 14th century in the form of so-called Morris drama, with its themes of St. George and the Dragon, ये बड़ा टिपिकल माइथोलॉजिकल थीम है इंग्लिश medieval लाइफ में, सेंट जॉर्ज एंड द ड्रैगन, and the anecdotes associated with Robin Hood of the Sherwood Forest. अभी मैं बिहार पर एक टीवी शो देख रहा था, तो बड़ा ही दिलचस्प मुझे एक कमेंट उसमें मिला कि पप्पू यादव की पूर्णिया में रॉबिन हुड की इमेज है। द इंग्लिश लिटरेचर इन मी, यू नो, इट गॉट टिटिलेटेड। रॉबिन हुड की इमेज है। तो देखिए, मेडिवल इंग्लैंड में रॉबिन हुड एक ब्रिगेंड, एक रॉबर हुआ करता था जो गरीबों को लूट के, धनाढ्यों को लूट के और गरीबों की सहायता करता था। He inhabited the Sherwood Forest in Midlands, in mid England, middle geographical region of England. तो फ्रेंड्स, ये शुरुआत का जो मॉरिस ड्रामा शुरू हुआ, ये मॉरिस ड्रामा बेसिकली सेंट जॉर्ज एंड द ड्रैगन, the episodes of Robin Hood, the exploits of Alfred the Great, the exploits of King Bruce of Scotland and the Battle of Bannockburn, इन थीम्स को लेके चलते थे। तो ड्रामा हम लोग को पढ़ना है। Second thing, poetry. Poetry, it starts with Beowulf.
सेंचुरी एडी। लगभग इसी काल में इंग्लिश लिटरेचर में पोएट्री की शुरुआत होती है। इसके बाद इस अफसाने को अल्फ्रेड द ग्रेट के राइटिंग्स, मिडिवल इंग्लैंड में बहुत लोगों ने आगे बढ़ाया, कल्मिनेटिंग इन द achievements of Geoffrey Chaucer, who wrote the first important English poetic text, that is the Canterbury Tales, based on the stories narrated by pilgrims, जब वो सेंट थॉमस बेकेट के श्राइन में कैंटरबरी में जाते थे। तो दोस्तों, ऐसे ही इंग्लैंड में पोएट्री की शुरुआत हुई इंग्लिश लिटरेचर में, और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, हिंदुस्तान बनता गया। जब इंग्लिश लिटरेचर पैन ग्लोबियाना लैंग्वेज के रूप में विस्तृत हो गया, पूरे विश्व पे इंग्लैंड का शासन हो गया, तो फिर इंग्लिश पोएट्री घर घर की दास्तां हो गई। द थर्ड पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज द थर्ड सेक्शन which we take into consideration is fiction, novel and short story. It has got two components, इसके दो अंग हैं, एक तो उपन्यास और दूसरी लघु कथा। और चौथा पार्ट जो इस सिलेबस का है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज नॉन फिक्शन। essays and other writings। तो दोस्तों, अगर सिलेबस को हम लोग देखते हैं, ये 4 पार्ट शुरुआत के हैं। हमने पहले ही बताया कि 10 पार्ट टोटल हैं। अब इन चारों पार्टों से आपकी अपेक्षा क्या की जाती है जेईटी द्वारा, इसको आप देखिए। सबसे पहले फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। इस पे आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आ सकते हैं। सेकंड, अब इन कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में आप जानते हैं जैसे कि ट्रेडिशनल कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं, आपको इस पर आधारित दिया जाएगा, उसको समझना है, उस पर शॉर्ट टाइप आंसर्स होंगे, अप्लाइड क्वेश्चंस होंगे। ये सब तमाम चीजें आपको इन चारों सेक्शंस पे आ सकता है। सेकंड, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग एंड एनालिसिस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ना ये सिर्फ इसका कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं, द एंटायर इंग्लिश लिटरेचर के ये 4 सेक्शन आपको कवर करना है। एंटायर इंग्लिश लिटरेचर,
Now, to make your job a little easy, let me be clear to you कि एंटायर इंग्लिश लिटरेचर ये एक एनालाइज करने वाला फ्रेज है। जब से फ्रॉम द 13th and 14th century AD, since when English literature began to take shape, एक स्वरूप लेना शुरू किया, तब से आज तक जो पोएटिक एवोल्यूशन हुआ है, जो ड्रामास इवॉल्व हुए हैं, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज इत्यादि इत्यादि, तो अब ये लगभग 700 साल का लिटरेचर आपको स्टडी करना है। डोंट गेट फ्राइटेंड और बॉग डाउन, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। इसमें क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कम इंपॉर्टेंट है, किस पे कितना एम्फेसिस देना है, किसको एक कैवेलियर एटीट्यूड के साथ बस देखते हुए निकल जाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। माय बेसिक जॉब इज दिस इटसेल्फ। Second thing, be careful about this entire English literature. इसका मतलब बहुत साफ है, ना सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर जो कि इंग्लैंड में सृजित किया गया, but also the English literature which was written in North America, for example in the United States of America, in Canada, in the West Indies, Guyana, बारबाडोस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। आपने वीएस नाइपॉल का नाम सुना है ना, विद्या प्रसाद शंकर नाइपॉल, नोबेल पुरस्कार विजेता थे इंग्लिश लिटरेचर से, एंड ही बिलोंग टू गयाना, राइट? ही बिलोंग टू द वेस्ट इंडीज। So not only the mother English literature of England, but also the colonial literature of North America, including the United States of America and Canada, of the West Indies, the Caribbean islands, Guyana, Barbados, Trinidad and Tobago, etc., etc., of Central and South Africa, wherein you have the development of English in Zimbabwe, which was Rhodesia of yesteryears. नाइजीरिया, 𝐍𝐼𝐶 का नाम आपने सुना होगा, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, वो नाइजीरिया को बिलोंग करते थे और इंग्लिश लिटरेचर से उन्होंने नोबेल पुरस्कार लिया। नाइजीरिया हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, नामीबिया हुआ, आपने नडीन गॉर्डिनर का नाम सुना होगा, जो कि साउथ अफ्रीका की थी और इंग्लिश लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त की। हर लिटरेचर oozes the colonial pathos of the black people, the poverty, the squalor, the filth of the black people in South Africa. तो इंग्लिश जैसे कि यहाँ डेवलप की, उसको भी हम लोग को अध्ययन करना है। English as it developed in the Indian subcontinent, because India was the jewel in the crown, है ना भाई? ब्रिटिश ताज में वो कोहिनूर था भारत, और इंग्लिश डेवलप्ड इन अ माइटी वे इन इंडिया, राइट फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ साकी दीन मोहम्मद, जो कि पहली इंग्लिश राइटिंग मानी जाती है इंडिया में, द ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद, तब से लेके द लिटरेचर ऑफ हेनरी विवियन लुई डोरेजियो, द लिटरेचर ऑफ तोरू दत्त, द लिटरेचर ऑफ माइकल मधुसूदन दत्त,
The writings of Raja Ram Mohan Rai and the Brahmo Samajis, the pamphleteers, the political activists, they all wrote in English. And some of Indians have created a name for themselves in the English language. राजा राव का हम लोग को करना है कांतिपुरा, टेक्स्ट में स्टडी करना है. He was a doyen of English writing in India. Then we have Mulk Raj Anand, who wrote that great work, Two Leaves and a Bud, Kuli. We have R.K. Narayan, whose literature is a literal litany of English writing in India. The Guide, the Painter of Science, the Vendor of Sweets, etc., etc. R.K. Narayan literally immortalized the small hamlet of, rather suburban town of Malgudi. वो हम लोग को पढ़ना है. Then many Indians have obtained laurels in the English writing. Anita Desai, then Nayantara Sehgal, Niraj C. Chaudhary, one of the greatest writers in modern English. He emigrated to England. He was a typical Bengali Bhadralok, Niraj C. Chaudhary, written immortal works like A Passage to England, Scholar Extraordinary on the Life of Swami Vivekananda, Autobiography of an Unknown Indian, अपनी ही जीवन गाथा उन्होंने लिखी है, इत्यादि इत्यादि. These great writers have popularized the English genre in India. Now before I go ahead, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं. There has been only one English writer, one English Indian writer, rather Indian writer in English, who has achieved the 𝐺ज्ञानपीठ award in English literature. Can you name him? Only one English writer in India, rather Indian writer in English, who has achieved the 𝐺ज्ञानपीठ award, the highest literary award of India in English literature. Can you name him? Anybody? You corrected him? No. So anyway, he is Amitav Chaudhary. Amitav Ghosh. Very sorry. I took the name of the chairman of JPSC. Amitav Ghosh. Huh? So friends, इसके अलावा the English writings in Australia and New Zealand, I mean wherever, Pax Britannica spread its linguistic culture, सब जगह तो अंग्रेजी में लिखना हुआ. तो ये पूरा का पूरा एंटायर इंग्लिश लिटरेचर को हम लोग को चुनना है. इट्स अ पैनोरामिक गैमट, जिसमें से चुन चुन के मुझे आपको बताना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए टॉपिकल है, कहाँ से क्वेश्चंस डेंसिटी ज्यादा आ सकती है, इत्यादि इत्यादि. गोइंग फर्दर, द फिफ्थ टॉपिक in your syllabus is the growth, development of the English language.
फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, इंग्लिश इवॉल्व out of two basic sources. First, assimilation of other languages, जैसे with the invasion of Great Britain by Julius Caesar in 43-44 BC. Great Britain became a part of the Roman Empire. और रोमन एम्पायर के प्रादुर्भाव के साथ ही ग्रेट ब्रिटेन में लैटिन भाषा का प्रसार शुरू हो गया। आपने ये अफसाना सुना होगा कि जब जूलियस सीजर ब्रिटेन को जीता तो उसने बड़ा फेमस एक स्टेटमेंट बोला, वेनी वेडी वैसी, VENI, वेनी वेडी वैसी, I came, I saw, I conquered. मैं आया, मैंने देखा, मैं विजयी हुआ। वेनी वेडी वैसी, I came, I saw, I conquered. तो उसी समय से लैटिन भाषा का प्रसार ब्रिटेन में शुरू हुआ। लैटिन के साथ ग्रीक भाषा का रिसाव आया, लिंग्विस्टिक डिफ्यूजन जिसको कहा जाता है। देन वी हैड cultural influences from other European languages, like the Viking invasion of England bestowed a degree of Scandinavian languages and knowledge of Scandinavian languages like Danish, डेनमार्क की भाषा, स्वीडिश, स्वीडन की भाषा, नॉर्वेजियन, नॉर्वे की भाषा। तो वाइकिंग इन्वेजन जो इंग्लैंड का था एंड द कल्चर ऑफ द स्टोनहेंज, इससे इंग्लैंड में स्कैंडिनेवियन भाषाओं की, स्कैंडिनेवी भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ। तो देखिए, लैटिन, ग्रीक, स्वीडिश, डैनिश, नॉर्वेजियन, इन भाषाओं का 1066 में विलियम ऑफ ऑरेंज, प्रिंस विलियम ऑफ नॉर्मैंडी इन नॉर्थर्न फ्रांस डिफीटेड इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स के युद्ध में उसने इनको डिफीट किया। और उसके साथ ही फ्रांसीसी भाषा इंग्लैंड के अभिजात वर्ग की भाषा बन गई। लगभग 300-350 साल तक, right from the Battle of Hastings in 1066 AD to the accession of Henry IV in 1399 AD, the official language, the language of the elites, the language of the crème de la crème in England was French। और अंग्रेजी क्या रह गई? साधारण लोगों की, होय पोलोय की भाषा। और ये भी अंग्रेजी बहुत सुव्यवस्थित नहीं थी। It was not a well organized scientific language. It had had a haphazard growth, and it incorporated elements of various vernacular languages in England. वेल्स में वेल्श लैंग्वेज, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश लैंग्वेज, आयरलैंड में आयरिश लैंग्वेज, और इंग्लैंड में कुछ अन्य
स्वदेशी भाषाएं, देशी भाषाएं चलती थी, जैसे कॉर्निश हुआ, मांक्स हुआ, ब्रेटन हुआ, गायलिक हुआ, वेल्श, आयरिश, स्कॉटिश, कॉर्निश, मांक्स, गायलिक, ब्रिटेन, जिसको आम तौर पे सेल्टिक लैंग्वेजेस कहा जाता है। तो सेल्टिक लैंग्वेजेस से ही इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रोथ हुआ, और धीरे धीरे हमने कहा ना, दो पैरेलल स्ट्रीम्स थे, एक तरफ तो असिमिलेशन, दूसरे तरफ लिंग्विस्टिक रिफाइनमेंट। लिंग्विस्टिक असिमिलेशन के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज ने लैटिन, ग्रीक, स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस, फ्रेंच, जर्मन, ट्यूटन, इन लैंग्वेजेस से अपने को एनरिच किया, और लिंग्विस्टिक रिफाइनमेंट के तहत जो वहां की स्वदेशी भाषाएं थी, गायलिक था, ब्रेटन था, मांक्स था, कॉर्निश था, वेल्श था, स्कॉटिश था, आयरिश था, इनमें परिष्करण करके धीरे धीरे आधुनिक अंग्रेजी का स्वरूप बनने लगा। और मैंने कहा ना, 1399 में हेनरी द फोर्थ, the Tudor king who ascended the throne of England, was the first purely English-speaking king of Great Britain. उसके पहले इंग्लैंड के राजा अक्सर फ्रांसीसी जड़ों को ग्रहण किए थे, क्योंकि मैंने कहा ना कि विलियम ऑफ नॉर्मैंडी से जो वंशावली शुरू होती है उसमें बहुत बड़ा भाग फ्रांसीसी शासकों का भी होता है। और ये वही दौर था जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध, 100 Years वॉर भी हुआ। तो चूंकि वो वॉर था, लेकिन सांस्कृतिक आदान प्रदान उसमें बहुतायत में हुआ, और उससे भी इंग्लिश लैंग्वेज का असिमिलेटिव एस्पेक्ट मजबूत हुआ। Then we come to the 6th part of your syllabus. The 6th part deals with Indian writing in the English language. देखिए, ये गलतफहमी है कि लॉर्ड बेबिंगटन मैकॉले के मिनट से 1835 में इंग्लिश भाषा की शुरुआत भारत में होती है। नहीं, इसके बहुत पहले ही भारतीयों ने अंग्रेजी सीखना और लिखना शुरू कर दिया था। देखिए, मैंने पहले ही बोला, टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द 18th century ताकि दीन मोहम्मद ने एक किताब लिखी, द ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद। वो माना जाता है किसी भारतीय द्वारा लिखा गया अंग्रेजी में पहला ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, उसके बाद भारतीयों ने इस कदर
अंग्रेजी को अपनाया कि विद्या प्रसाद नायपॉल, जिनका नाम एक चंदेल राजा के नाम पे, विद्याधर के नाम पे पड़ा था, रखा गया था, उनके वंश माता पिता ने रखा था, और भारतीय संस्कृति से अगाध प्रेम, उन्होंने कई क्लासेस लिखा है, इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज, है ना, ऐसे करके, और बुकर अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। अब जाके वो नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर लिया उन्होंने 1999-2000 के दरमियान। एक भारतीय ने अंग्रेजी साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, ये कितने बड़े गौरव की बात। तो ये तो एक कल्मिनेशन ऑफ अ कल्चरल प्रोसेस था, basically right from the opening period of the 19th century। राजा राम मोहन राय ने कई किताबें लिखी, प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस, गिफ्ट्स ऑफ मोनोथिज्म, उन्होंने कई डिवाइन वर्शिप ऑफ गायत्री, लॉज ऑफ हिंदू इनहेरिटेंस, कई किताबें उन्होंने अंग्रेजी में लिखी। और शुरुआती दौर में इन्हीं लोगों ने अंग्रेजी भाषा को भारतीयों के बीच सशक्त किया, और धीरे धीरे फिर वो समय आ गया। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी द बंगाली पत्रिका छापी अंग्रेजी में। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रोड इन इंडिया एकदम क्लासिक इंग्लिश में लिखा है, वेज एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इत्यादि इत्यादि। तो भारतीयों ने फिर इंडियन ट्रायोलॉजी, हमने पहले ही बताया, राजा राव who wrote that classic The Serpent and the Snake and Kanthapura, Mulkraj Anand who wrote Two Leaves and a Bud, The Untouchable, The Coolie, R.K. Narayan who wrote The Guide, The Malgudi Days, The Painter of Science, The Vendor of Sweets, इत्यादि इत्यादि, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना। तो ये ट्रायोलॉजी ने इंग्लिश लिटरेचर को इंडियंस के बीच बहुत प्रचारित किया। हम लोग डिटेल में इनका स्टडी करेंगे, कुछ टेक्स्ट भी हम लोग के सिलेबस में है, और ये खुद भी दे आर टाइटैनिक पीपल, है ना, हु हैव टू बी analyzed at great length. Then friends, coming to the next generation, we have a crop of people. Jhumpa Lahiri is there, then aapka this Amitabh Ghosh is there, then Vikram Seth is there, Anita Desai is there, a lot many people. Nayantara Sehgal is there, है ना, Ruskin Bond, that immortal wanderer of the mountains, who got the Llewellyn Rhys Award for The Room on the Roof, and has written classics like Our Trees Still Grow in Dehra. ऐसे कर करके he is still alive and kicking, Ruskin Bond. तो ऐसे ऐसे लोगों ने भारतीयों के बीच, ये चैप्टर 6 टॉपिक 6 आपका सिलेबस का इन्हीं से संबंधित है। देन वी कम टू टॉपिक 7। टॉपिक 7 डील्स विथ कल्चरल राइटिंग। It deals with the cultural aspect of the language.
देखिए, बहुत फेमस कल्चरल सोशियोलॉजी में एक थियरी है, द साफिर-वोर्ट हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस कहता है कि पीपल एक्सपीरियंस देयर वर्ल्ड थ्रू देयर लैंग्वेज। जो सिंबॉलिज्म है लैंग्वेज का, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूरी अनुभूति लोगों को उनके भाषा द्वारा होती है। People experience their world through their language, and language shapes thought. So, language shapes thoughts. ठीक है? इस साफिर-वोर्ट हाइपोथेसिस को लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी भी कहा जाता है, जैसे कि एक सापेक्षावादी प्रवृत्ति लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए। पीपल एक्सपीरियंस देयर कल्चर, देयर वे ऑफ लाइफ, देयर थिंकिंग, देयर आउटलुक, देयर फिलॉसफी थ्रू देयर लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज कंडीशंस the process of human thought। ठीक है? तो ये पूरा हम लोग को द कल्चरल डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज हम लोग को टॉपिक 7 में करना, राइट। टॉपिक 8 डील्स विथ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये आलोचनात्मक साहित्य, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है इंग्लिश लिटरेचर का, और हम लोग को पढ़ना है। जॉन ड्राइडन, who belonged to the 17th century England, coinciding somewhere with the restoration period of Charles II, is hailed as the father of English criticism. और इन्होंने बड़ा फेमस एक किताब लिखा जिससे कि इंग्लिश क्रिटिसिज्म की शुरुआत मानी जाती है, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी। वक्त के साथ ये कह लीजिए कि इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कॉन्टूर्स एक्सपैंड करते गए
और डाइवर्सिफिकेशन आया, इसमें विलियम हैज़लिट आया, थॉमस कार्लाइल आए, चार्ल्स लैम्ब दैट मास्टर एसेइस्ट। इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उसका भी एक बहुत बड़ा स्थान है। जॉन रस्किन आए एंड द ग्रेट स्टाइलिस्ट होरेशियो वाल्टर पेटर। होरेशियो वाल्टर पेटर वाज आल्सो ग्रेट लिटरेरी क्रिटिक। ये तमाम लोग आए और इंग्लिश क्रिटिसिज्म की प्रक्रिया आगे चली। टुडे इट फॉर्म्स अ वेरी वेरी वाइटल सेगमेंट ऑफ English literature, right? Now, then we come to the 9th part of your syllabus, and that is literary theory in the post Second World War period. Friends, as you know, it is an important part of postmodern literature. सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो टी.एस. एलियट वगैरह, जो आपका पैसेज E.M. फॉस्टर, मॉरिस फॉस्टर का, विलियम बटलर येट्स का पीरियड, ये तो मॉडर्न लिटरेचर में माना जाता है। इट एंड्स विथ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। In 1945, with the Treaty of Potsdam, the Second World War ended, and conservatively, from about 1950, post Second World War period माना जाता है। अब इसमें you have Graham Greene, इसमें you have many great American authors, जिन्होंने नोबेल प्राइज भी लिया, पुलिट्जर अवार्ड भी बहुत जीते, बुकर अवार्ड भी जीते। तो इस पीरियड में इंग्लिश लिटरेचर टुक अ डिफरेंट डायमेंशन ऑल टुगेदर। इंग्लिश लिटरेचर बिकेम मोर एडवेंचरस, मोर कॉस्मोपॉलिटन, मोर परमिसिव। It transcended from the sacred to the profane. तो वो समय एक अलग सेक्शन में दिया गया है, दैट इज चैप्टर 9। एंड फाइनली द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 10, it deals with research methods, tools and techniques. If a certain literary author, he adopted a certain ideology or a certain way of life and profoundly influenced the generation of his period, and by his writings, ऐसा उसने क्यों किया? The social, economic, cultural, political and logistical aspect of literary endeavors are to be analyzed, dissected and vivisected under this section. So friend, I have put before you a structural aspect of the syllabus. ये एक खाका है जिसके अधीन हम लोग को तैयारी करना है, और मैं आपके साथ रहूंगा।
अपने से आत्मश्लाघा करने से कोई फायदा नहीं। इतना मेरा कॉल आपके साथ है कि मैं इस आंतरिक विश्वास के साथ यहाँ खड़ा हूं कि आई कैन बी अ कैटलिस्ट टू यू in your quest for glory. So together, let us begin on this great venture of success. As John F. Kennedy said, John Fitzgerald Kennedy का नाम आपने सुना है ना? He was a very charismatic president of the United States of America. उसने कहा था, now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though embattled we are. ठीक है? तो उसी भावना के साथ we enter the fray. We enter the fray, we take up the challenge, and we will scale heights hitherto unscaled. I thank you for this class. Hoping to be with you in the future. I will be there with you in the future, inviting you in this common quest for achievement. I am Rajeev Ranjan. Thank you.